Good morning, friends. This is CA Swarup Ghosh from Stock. Now, as usual, we are back on Saturday. ये पहले हम कुछ एनालिसिस आपको दिखाएंगे एंड अपने इसमें लास्ट वीक में भी जो हमने फॉलो अप वीडियो दिया था जिसमें हमने डेट चेंज की बारे में बोला था वो कितना बेहतरीन काम हुआ है. द डेडली गैन कैलकुलेशन लास्ट वीक विच आई हैव मेंशन्ड दैट वर्कड मैग्निफिसेंटली. सो ये जो है अगर आपको फ्यूचर भी जानकारी आ गया है, इफ़ यू नो द फ्यूचर देन ट्रेडिंग इज़ बिकमिंग रियली वेरी इजी. एंड हमने ट्विटर में भी ये बात काफ़ी बार कहा है. तो चलिए ये जो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मीटिंग मी इन द फ्री जूम मीटिंग. आपने काफ़ी सारा लोग इंटरेक्ट किया है, काफ़ी सारा लोग हमारा जो स्टॉक को सेटअप लिया, मेंबर भी बन गया है. And they are very happy. I am proud of you people that you have already started making money. I am also available on Twitter. As I am saying, इसमें Twitter में आप हमको फॉलो कर लीजिए कि Twitter में इतना सारा लाइव मार्केट में इम्पॉर्टेंट इनपुट देते हैं. तो आपकी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग है या इक्विटी ट्रेडिंग है, जो भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे तो उसमें आपका एडवांटेज मिल जाएगा. Because these are the things I do in live market, and these are the things I also trade. Okay. Now stock diagnosis, as usual, people are taking help of this to really find out what are their mistakes and basically where they should correct their trading. ये जो है हम लोगों का जो आपकी एडवांस जो स्टॉक स्किनर है, स्टॉक सेटअप है, ये भी आज की तारीख में रेंटल यूसेज में आपको मिल जाएगा. एंड हम लोग ये लॉन्च प्राइस रखा है 5,000 रुपीज़ पर मंथ, बट एडवांस पेमेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस. कोई भी इंडिकेटर आपको जो इच्छा लगे ले लीजिए, बिकॉज ऑल आर इक्वली पावरफुल. ओके, सो हम लोग जो लाइव स्टार्ट करते हैं आपकी ज्ञान शीट लेके हम लोग लाइव स्टार्ट करते हैं. सो आई विल शो यू द ज्ञान शीट. नाउ फर्स्ट इज ये जो हम लोगों का जो पुराना जो हम लोगों का अवेलेबल है, ये है आपका नया आया है प्राइस वॉल्यूम इंडिकेटर. ये स्क्रीनर है बेसिकली. ये आपको लाइव मार्केट में स्क्रीन करके देगा कि जिसमें प्राइस एंड वॉल्यूम एक साथ ब्रेकआउट हुआ है. एंड दिस इज रियली वेरी 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 इंटरेस्टिंग. ये देखिए, इसमें ना हमारा बुलिश में कुछ भी नहीं आया है, लेकिन बीआरईस में मादरसन सुमी एंड टाटा केमिकल आया है. ओके, सो इट विल गिव यू इन द लाइव मार्केट. एंड ये स्कैनर भी है आपकी लाइटनिंग स्कैनर. सो एवरीथिंग इज 5,000 रुपीज ऑन एडवांस is 15,000 and on quarterly basis in fact. So everything is available now. ओके, एंड ये हमारा अवेलेबल है आपका फादर गनफादर सन टेक्निक. एंड ये बेहतरीन है आपकी ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ये डैशबोर्ड में जो आता है ना, दिस एक्चुअली ब्रिंग्सिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी एंड इवन इन फॉर अदर ट्रेड्स. ओके, तो ये हम लोगों का जो अवेलेबल है, यू कैन ऑल्सो take it. Okay, so let us start off with our GAN sheet. हम लोग ये RBL बैंक दिखाएंगे, तो उसकी पहले निफ्टी एनालिसिस पहले कर लेंगे. ठीक है, सो निफ्टी जब एनालिसिस करने जाएगा, दिस इज अ डेली चार्ट ऑफ निफ्टी. हमने इंडिकेटर अभी तक सेटअप नहीं किया है. आपका जो है ये गैन ऑरोरा मास्टर गैन सेटअप एंड आपकी ये लेना है आपका SS all-in-one RSI indicators. So all these things are available. I will come to this as and when it progress. Okay, so we start off our life with GAN trading, but before that I would also like to see that ये जो हम लोगों का जो निफ्टी की जो हम लोग फोरकास्टिंग किया था, तो वो फोरकास्टिंग हमारा लास्ट वीडियो में जो 11th बोला था वो ठीक आया क्या नहीं, वो देखना है. ये देखिए, ये इधर BNF है. सो पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने सिंपली ड्रॉप डाउन से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हिडन हियर. So obviously these are for paid members. So this is, if I select Nifty, automatically इधर Nifty आ गया. So once Nifty has come, हम लोग पहले देख लेते हैं लास्ट
वीडियो की फोरकास्ट है से खाली एक दिन ही हम देखा है, तो -1 में मतलब है इट विल गो बैक टू 11th वाज द डेट व्हिच वी मेंशन्ड। ओके, सो आप 11th में देखिए कितना सारा चेंजेस आया है इधर एक, एंड दीज आर डिफरेंट एंगल्स, मून साइकिल, योर pythagoras cycle, 1 year cycle, this is 1 year cycle, so all those things are combined. So if you have multiple dates here, automatically you will have a deadly impact, and on 11th we had a deadly impact here. Okay, and here's a huge gap down with a negative candle. Okay, so all these things are predictable. आप देखिए ये आपका जो करंट जो है, करंट में क्या हो सकता है इन द कमिंग वीक। लेट्स से इस वीक में हमने कमिंग करंट वीक में देंगे, तो आप देखिए टुडे इज 12th, तो टुडे तो हो गया है, आज सैटरडे है, लेकिन ये जो 16th जो है, 16th में टेरिफिक आपका चेंजेस आएगा। 16th of February आप नोट कर लीजिए, एंड दीज आर अनमिसेबल थिंग्स। ओके, सो ये जो चीज़ है, दीज आर ऑल कैलकुलेशंस। एंड इसकी बात क्या है, हम लोग जो अभी कमर्शियली आपने लॉन्च किया है, ये है आपका निफ्टी इंट्राडे गैन चेंज टाइम, जिसमें इट वाज प्रीवियसली फॉर 2 years, नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू 365 days। ओके, 2 साल से 1 साल में हो गया, 1 साल करवा दिया गया। एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, यू कैन टेक इट, एंड दीज आर रियली ग्रेट स्टफ। एंड आप खुद देख लेंगे कि आप अपने, इफ़ यू स्टार्ट एट 9 o'clock, आपकी कितनी बजे आपका स्टॉक चेंज होगा। ओके, सो आरबीएल का प्राइस था 145 था इसमें, तो देयरफॉर आरबीएल बैंक में हम जाएंगे तो हम वो देख लेंगे, आरबीएल की एनालिसिस है। सो दिस इज अराउंड 145 आपका ओपनिंग था, एंड हाउ इट एक्चुअली चेंज्ड आवर लाइफ। सो फर्स्ट बिफोर दैट आई वुड लाइक, अच्छा 145 में हम टाइम भी हम देख लेंगे कितनी बजे ये बोल रहा है कि हम लोग चेंज हुआ है। आरबीएल बैंक इज 11 hour 22 minutes, चेंज एक्सपेक्टेड, टाइम साइकिल इज टू इन एवरी 2 hour 22 minutes। तो 11:22 में आरबीएल बैंक चेंज होगा, दैट आई विल कम बैक। ओके, नाउ इफ यू लुक एट निफ्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स द मदर ऑफ एंटायर थिंग। निफ्टी में आप देखिए यहाँ आपकी एक हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, अभी तक इंटैक्ट है, सो इट इज नॉट सो बियरिश, बट थोड़ा बहुत ये वोलेटिलिटी दिखा रहा है। ओके, बट इफ यू नाउ let me switch on the setup, नॉर्मल ड्राइंग में क्या दिखा रहा है कि निफ्टी इज ऑन ए सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। एंड इसमें और एक चीज है, आप देखिए इसमें दीज आर ना साइकिल्स, निफ्टी साइकिल चेंजेस। आप जहां साइकिल, दोनों साइकिल एक साथ मार्ज हो जाता है ना, उधर बेहतरीन इम्पैक्ट होता है। आप देखिए ये साइकिल आपका इधर मार्ज हुआ है, सो देयरफॉर ये एक कैंडल आजू बाजू में हो सकता है। आप कितना गैप डाउन हुआ है, ये साइकिल जब आपको मार्ज हुआ है, कितना गैप डाउन हुआ है इस कैंडल की। So therefore, you get to learn so many things when you are associated with us. Okay, now let us do one thing. Let's switch on one by one. Now Nifty, first of all, let us switch on the Nifty GAN. Now once we switch on the Nifty GAN part, let me take you through the big picture. Now if you look at the Nifty GAN part of it, Nifty GAN actually says that it was a buy above 17. Now okay, so this is daily chart. Let us change it to 5 minutes chart. I think that will be better, and let's put it on auto and it will work. सो ये निफ्टी की 5 मिनट चार्ट में था। सो निफ्टी एक्चुअली हैड ए गैप डाउन ओपनिंग। ये गैप डाउन ओपनिंग क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, सो वी हैव ऑल द एक्सप्लेनेशन। सो विल प्रोबेबली इतना ज़्यादा बोलने का टाइम भी नहीं है इसमें। सो वंस इट इज़ डन, आप देखिए ये जो इतना गैप डाउन हुआ है, इसकी पहले लेकिन इसको ये सिग्नल दिया था एंड कंसोलिडेट कर रहा था। एंड इफ यू लुक एट केयरफुली, प्राइस वाज मोर टाइम्स below the cobra line, so therefore ये selling pressure generate कर रहा था। So therefore if I again switch on the auto trend line part of it, GAN trend lines, आप देखोगे दोनों के कॉम्बिनेशन दिखाएंगे कि निफ्टी की ये दोनों बैक टू बैक सिग्नल होने का बाद 10th February ने इसको डेंजरस सिग्नल दिया है कि नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लैंडिंग। सो देयरफॉर डिसेंट नीचे जाएगा
ये एकदम पूरा क्लियर है. ओके, नाउ व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, यू आर वेटिंग फॉर ए स्लाइड. ये देखिए वायलेट कलर लाइन में ये स्लाइडिंग चालू किया है. सो नेक्स्ट डे अब देखिए आपका मौका ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला कि बाई अबव सेल बिलो लाइन की नीचे आपको खुला है, मौका ही नहीं मिला ये गैप डाउन की एडवांटेज लेने के लिए. हम लोग क्या करते हैं, इस सब जगह पे ना एक पुट ले लेते, एट द मनी पुट ले लेते, क्योंकि बिकॉज वंस यू हैव 3 times signals and you have most of cobra line even before the generation of signals, you can take an affirmative confirmation that it might go down. Okay, so ये जो है these are for option trading. Okay, you could have taken this advantage. अगर आपका ये advantage नहीं मिला तो आप ट्रेड कैसे किया? Okay, now so we have shorted, you can have we have taken options here, put options, and then booked as per our level. अब देखिए ये दोनों लेवल है ना, ये है 7 ईयर का लेवल है. सो विच इज़ ए वेरी वेरी डेंजरस लेवल. इस लेवल में आके ऊपर से आएगा तो यह हमारा सपोर्ट मिलेगा. इस लाइन में, ये पिंक लाइन में अगर ब्रिज करेगा तो ये नीचे जाएगा. सिंपल है. एंड दीज आर 7 year cycles. ओके, यू कैन सी दीज आर ऑल शेमिता साइकिल्स. सो यू कैन फाइंड गूगल एंड देन फाइंड इट आउट. ओके, तो ये निफ्टी का आप देखिए कहाँ द पॉइंट वेयर एक्चुअली द सिग्नल इज गिविंग. ओके, नाउ आई विल ऑल्सो स्विच ऑन माई all setup GAN, all setup all in one RSI setup. So all these things once you set up, अब देखिए इसमें निफ्टी की ट्रेंड है, दैट इज निफ्टी फ्यूचर की ट्रेंड है 20 DMA का ऊपर है. सो बेसिकली स्टिल इट इज बुलिश. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज टेकिंग ए ट्रेंड लाइन सपोर्ट. ओके, नाउ अब देखिए इवन फॉर योर ट्रेड, डेली ट्रेड, अब वहाँ ऑप्शन ले लिया, अभी यहाँ जाके कॉल ले लो. यह कॉल आपका जो आपने 2 सिग्नल है, एक तो शॉर्ट एग्जिट सिग्नल है प्लस एक कोबरा बेंड हुआ है उसकी सिग्नल है. अब इस जगह पे कॉल ले लो एंड देन यू कुड हैव टेकन दिस एडवांटेज. ओके, अब यहाँ जाके आपका जो निफ्टी जो है, व्हाई इज इट दैट यहाँ से घूमा है. एक तो है हमारा दिस इज एन एरिया ऑफ बुल ट्रैप. बुल ट्रैप मेजरमेंट के लिए काफ़ी सारा वीडियो है, आपको दिखाया भी गया है. सो एंड प्लस you have a trend line crossing here. So once it crosses, it actually acts as a resistance, and this is a price support line as per auto calculated line here, and you have a resistance here. So therefore यहाँ जाके ना आपने शॉर्ट इज जनरेटेड एट 17,420. इस जगह पे हम नहीं करेंगे, आई विल बी वेटिंग फॉर कॉन्फर्मेशन. सो वंस इस जगह पे अगर शॉर्ट आपको शॉर्ट किया है, सो बेसिकली प्राइस हैज गॉन बिलो दी कोबरा लाइन. एंड अभी देखिए कहाँ शॉर्ट मिला है. दिस इज द एरिया. हम अगर विदाउट एनालिसिस इस एरिया में आप कर सकता है. एंड दिस इज द एरिया वेयर एग्जैक्टली द RSI दैट टाइम वाज नेगेटिव. इवन टुडे इट इज नेगेटिव, बट इसकी एक रूल्स है. सो वो रूल मान के उसको करना पड़ेगा. नाउ वंस यू शॉर्ट इट हियर, आप देखिए you got an winning trade, another winning trade. So what we are saying is इसकी जो है ना ताकत it is very very powerful setup. Okay, now we have another RBL bank. If you look at the RBL bank में हमने ट्रेड किया है 2900 लॉट. आई विल शो यू द सेम सेटअप RBL बैंक में हम कैसे ट्रेड किया है. नाउ RBL बैंक आप देखिए, नाउ on 11th, okay, we are on 11th में RBI बैंक shown the power. ये हेवी पावरफुल सेटअप दिखा रहा है, डीप ग्रीन कैंडल, और दिस इज नॉट ऑर्डिनरी ग्रीन कैंडल. हम लोग चुप बैठा था. क्यों? बिकॉज नाउ इफ यू सी इन द प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस स्लाइड वी हैव शोन दैट ये निफ्टी की था. नाउ दिस इज सिंस RBL बैंक बिलोंग्स टू, दिस इज RBL बैंक, राइट, बिलोंग्स टू प्राइवेट बैंक्स. इट पिक्स अप, you can set it to private bank DMA also is above 20. Okay, but in RBL bank we got a higher time frame, that is on daily time frame. You can set it in even your daily or hourly. So I have set it on hourly basis.
आपका नेगेटिव है. So therefore this is a false breakout. Negative price volume है, it is, so therefore it has to come down. So once showing 2-3 candles, these are all false candles. यहाँ तो short covering करके ये इसमें हुआ था. So initially I do not know what is the reason. What I am saying is that I have followed the price volume signal here, and then once there is a short signal, confirmation number 1. How many confirmations? Confirmation number 1 is it did a exit short. Second thing is but this is a contradictory signal because you have a selling pressure here and it is showing exit short. So therefore this signal has to be ignored. तो हम लोग क्या किया, इसमें आप देखिए there is a trend line resistance. आप देखिए ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, डेवलपिंग ट्रेंड लाइन, इसके पहले रेजिस्टेंस ही है. दिस इज अनदर रेजिस्टेंस. थर्ड वन इज इट इज बिलो कोबरा लाइन. हम इस जगह पर शॉर्ट मना कर रहा है, इस जगह नहीं करेंगे हम लोग. पूरा सेटअप देख के कोबरा लाइन नीचे जब जाएगा तभी करेगा. वंस द स्टॉक cleared the cobra line, now this blue line is a buy above line, okay, but then this is a reference line, okay. आप buy above कर सकते हो because this is the day opening, okay, and the day opening was 144. There are a lot of rules that you can really follow, but this is the area where you can take one lot short with a stop loss of above this, or if you are selling below the sell below level, your stop loss is the green line. So once I have got the slope, because I have a reference, once I have got the slope, we have actually shorted RBL Bank at around 145. 145.10, 145, okay, because once it crossed, I got the line, and then we got out around this level. So 2 rupees we have got, 2,900 into 2, that is your how much, let me see, 2000. First of all, initially I have done 2 times trade. 2,900 into 2 is your 5,800 in the first instance. हमने निकाल गया. But since this is a this is a Gann trend zone, हमने बोला था कि Gann chain में कितना बोला, 11 hour. हमारा ये जो आप देखिए इसमें क्या बोला, 11 hour 22 minutes. तो then we have gone back to Gann, okay, at 11 hour 22 minutes. आप देखिए this is about 11 hour 1 minute कैंडल हमने लिया था. So हमने ड्रॉ गेन, आपका जो जोन है ड्रॉ कर लिया. उसके बाद देखा इस जगह पे ही फिर शॉर्ट आया है, okay, but then this short I wanted to reconfirm that short. Once it has gone and tested here, again we have taken a small trade, okay, and then because these are intraday, you have to once you get 1 or 2 rupees, you have to get out. 2,900 rupees is not a small money. So we have not taken this trade. Why? Because it is below the Gann line, and then here you have a lot of resistance. So हमने छोड़ दिया. I was waiting, अगर फिर हम buy करेगा, अगर इसके ऊपर जाएगा तो, so it has not gone, and eventually this is a square number. So therefore this is a very strong resistance. Whenever this line comes, you have a lot of resistances here. So these are all automatic things, and you have different levels. Once again it has crossed the grand line, again we have after this green candle we have shorted when it crossed 143 below. 143 below जब गया तो हमने short किया. 143 जाके we have squared up on this line. Okay, once it falls below the 143 से हमने 141.75 में हमने निकाल गया था. So 143 minus 140 75 143 minus 141.75, that's the point we went out, into 2,900 equal to 3625 plus 5,800 हमारा पुराना था. So we actually got about 9,500. Okay, so these are all very safe things, safe trades, and that time it was also showing even it's a trade continuation, and I believe it will take another jolt. It will come down till this level, till the floor, and then it might go up. But RBL Bank is a good bank.
good bank to buy at this moment. I am not certifying the asset quality and all those. For me, intraday. Okay, so these are the things you can always trade on your own. And this is bank nifty, so I am not analyzing bank nifty. So with these kind of indicators, these are reliable indicators to trade. And you can also go to any any time frame and then do the trading. So safe traders will be taking trade above cobra line or below cobra line. So all these rules are there, and these parameters would help. तो ladies and gentlemen, यही यही था हमारा आज की मैसेज, दैट ये अगर आपको ट्रेड करना है, इफ़ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर, गो फॉर ए रिलायबल सिस्टम, एंड देन आपने टेक्निकल मान के चलना चाहिए. एंड दीज आर ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. कोई भी लेवल इधर हमने दिया तो दीज आर ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. आप देखिए ये वाला जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन कितना बार ये रेड लाइन से वापस आया. व्हाई? बिकॉज दिस इज आई थिंक इट्स अ क्यूब नंबर. नो, इट्स स्क्वायर नंबर. नाउ ये सब आपने कहाँ से मैनुअली कैलकुलेट करेगा? यू कैन नॉट, under any circumstances you cannot. Up the square number, cube numbers, all those are coming automatically. If you look at Nifty, you have n number of things. आपका देखिए ये 17,576 26 क्यूब. सो ये जो नंबर है ना, रनिंग मार्केट में आपको कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा. सो विद दिस 1 or 2 indicators you can really make your life very very simple and risk free trade. या हमारा जो ट्विटर है, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी इन ट्विटर, स्टॉक शो. माई ट्विटर इज SWRUP_घोष. ये नहीं है तो इसमें आपने फॉलो कर सकता है. एंड आई डू लॉट ऑफ थिंग्स इन ट्विटर, सो देयरफॉर यू कैन ऑलवेज फॉलो मी इन ट्विटर. आप देखिए कितना सारा ट्वीट किया है मैंने, जिसमें RBL बैंक की बारे में हम बोला था कि इतना टाइम पे ग्रैंड चेंज होगा, एंड देन उसके बाद इसकी हाल क्या हो गया. आपकी निफ्टी, अब द सेम चार्ट आप देखिए, इसमें जो गया था ये ट्रेंड लाइन हिट किया, उसके बाद ये नीचे आया है. आप देखिए निफ्टी का भी हम स्पॉट में हम बेसिकली आई हैव गिवन सजेशंस दैट वंस दिस गैन ट्रेंड लाइन हैज ब्रीच्ड, निफ्टी विल गो हियर एंड इवेंचुअली टच्ड हियर एंड कम बैक. Okay, so these are all mathematical modeling. That's why I'm saying mathematics is above everything. And therefore, if you follow mathematics, if you follow us on Twitter, you will only be benefited. You may not be part of our family. That's all right. But then you can start learning. Okay. With this is CS Swarup Ghosh. I would like to take leave for now. If you are interested in talking to me, please set up a Zoom meeting or for interaction. And if you want to be a part of our family, you can always do that. With this is CS Swarup Ghosh taking leave. Bye bye for now.